Hello everyone, welcome to my channel. First of all, so sorry for not uploading the video for a long time, but no worries, now you will get the videos on regular basis. And I hope you all must be busy in your preparation, exam preparation. Your exams are about to come, so all the best for your exam. And I was getting few requests to make the videos on output based programs and the series based programs. So in this video I will cover the topic output based program, and in the next video I will make series based. So let's start. So in the exam the question will be asked like maybe the part of the program will be given or the whole program will be given, and you need to write its output, and or a number of iterations can be asked, how many times the loop will run. So let's see. So first question, like for int I equals to 1, I less than 10, I plus plus, I am writing SOPLN in exam, system.out.println will be written, plus plus I. Fine. So this is the question. So you need to write its output. So I will tell number of iterations as well as the output. So first we will write iteration. Iteration, I hope you have understood how many times the loop will run, or repetition. Fine. Iteration I and output. Fine. So first iteration, first time when the loop will run. So this is the first iteration when I is initially 1. So what will be the output? So I is initially 1, condition will be checked, 1 less than 10, condition is true, so it will enter inside SOPLN plus plus I. So plus plus I means increment by 1. So initially it was 1, now it has become 2. Output is 2. So 2 will be displayed. Then where the loop will go? To the updation. In updation again the increment by 1. So latest value of I was 2, now it has become 3. So again the iteration, when the iteration is 2, what was the value of I? 3. Condition will be checked, 3 less than 10. Yes, again the condition is true. Then it will enter inside plus plus I. 3 का increment होके कितना हुआ? 4. Fine. Again it will go here, 4 का 5. Iteration 3 में I कितना था? 5. Fine. Condition true है, plus plus I. 5 का वैल्यू कितना हो गया plus plus I से? 6. Right. Then iteration जब 4 हुआ, I का वैल्यू 7. फाइन. कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है, प्लस प्लस आई मीन 7 का कितना हो गया? 8. इटरेशन 5 है. फाइन. सो नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बिकम 9. कंडीशन ट्रू, इट विल एंटर इनसाइड प्लस प्लस आई विल मेक इट 10. फाइन. नाउ इन द नेक्स्ट, व्हेन वी सी द नेक्स्ट, 10 का 11 हुआ, 11 लेस देन 10, कंडीशन विल बी false, so it will not enter, so that iteration will not be considered. Fine. So how many iterations are there? Loop कितनी बार चला? 5 times. So these are the number of iteration. And what is the output? Output is this: 2, 4, 6, 8, 10. So this is the output. So I hope you have understood this. So now we will see the next one. Now the next one is for int I equals to 1, I less than equals to 5, I plus plus, system.out.print I plus a plus 1 if I mod 2 equals to 0 and a mod 2
equals to 0. Okay, I am writing in a better way. I am writing the condition here. If I mod 2 equals to 0 and A mod 2 equals to 0, break. I hope you remember the break. In previous video we have discussed jump statements, break and continue. So we have used this break here. Break will bring you out from the loop, fine, based on the condition. So initial value of A is given. Initial value of A is 10. Fine. So this is the question. Now you need to write its output. So again, same thing we will write here, iteration. So this part is given, and the answer, how will you write? Like this, iteration, I and output. Let's see. So first iteration, what is the value of I? I is initially 1. Condition true हुआ, then it will enter inside. What is the output? Output क्या है? I 1 है, A 10 है, तो 1 plus 10 plus 1, 12. So output is 12. Fine. Now it will check the condition. If I mod 2 equals to 0, I mod 2, 1 mod 2 equals to 0 है? No, because 1 mod 2 is 1. So condition will become false, तो break नहीं होगा. Again it will go back, अपडेशन में जाएगा, सेकेंड इटरेशन. I का वैल्यू कितना हो गया? पहले 1 था, अभी 2. नाउ द कंडीशन विल बी चेक. 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? यस, कंडीशन इज ट्रू. देन इट विल एंटर इनसाइड. नाउ I is 2, A is constant. फाइन, A वेरी नहीं कर रहा, A constant है, A 10 ही है. तो I is 2, A 10, 10 plus 1 11. So 11 plus 2 13. Fine. Again condition will be checked. So what is the condition? I का वैल्यू 2, 2 mod 2 equals to 0 है? Yes. A mod 2 equals to 0 है? Yes. So it will come out from the loop. Break will take the control of execution out from the loop. So loop आपका कितनी बार चला? 2 ही बार चला. ये डिस्प्ले होने के बाद कंडीशन ट्रू हुआ, ब्रेक हो गया. ब्रेक ने क्या किया? कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन को लूप से बाहर ले आए, तो लूप फर्दर नहीं चलेगा. तो नंबर ऑफ इटरेशन कितना हुआ? 2 टाइम्स. 2 टाइम्स लूप चला और आउटपुट कितना था? SOP है, PLN नहीं है, तो हाउ विल यू राइट द आउटपुट? 12 13. दिस इज द आउटपुट. फाइन. इफ PLN is given, then you will write vertically. I hope it is clear. So this was the answer. Now we will see more programs. Let's see the third one. Now the next one is for int I equals to 1, I less than equals to 10, I plus plus. If I mod 7 equals to 0, break. Else if I mod 3 equals to 0, continue. Else SOPLN I. So this is the question. See how many jump statements are used in this question. 2 jump statements, break and continue. What is break? Break will bring you out from the loop when the condition will be matched, and continue will take the control of execution to the next iteration. Fine. ये क्या continue क्या करता है? Next iteration पे ले जाता है आपको. So let's see. I is initially 1, condition is true, so it will enter inside. I mod 7. So 1 mod 7 equals to 0 है? No, 1 mod 7 is 1, तो break नहीं होगा. Then it will go to the else if.
1 mod 3 इक्वल्स टू 0 है, नहीं, तो कंटिन्यू भी नहीं होगा। एल्स क्या होगा, SOPLN I। तो इटरेशन लिखते हैं जल्दी से, इटरेशन I एंड आउटपुट। So when the iteration is 1, I was 1, output is 1. Iteration 2. Iteration 2 में what is the value of I? 2 हुआ, I plus plus से 2. 2 less than equals to 10, yes, condition is true, enter inside. 2 mod 7 equals to 0 है, no, तो break नहीं होगा। 2 mod 3 equals to 0 है, no, तो continue भी नहीं होगा। क्या हुआ, when I is 2, SOPLN 2। 2 का कितना हुआ, 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। 3 mod 7 इक्वल्स टू 0, नो, तो ब्रेक नहीं हुआ, बट 3 mod 3 इक्वल्स टू 0, फाइन। सो इटरेशन जब 3 था, I 3 था, तो क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ, ठीक है। सो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू ने क्या किया, इट विल टेक द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू द नेक्स्ट इटरेशन। तो एल्स में नहीं जाएगा, कंटिन्यू से कहाँ चला गया, I प्लस प्लस पे। तो I3 था, तो नथिंग विल बी डिस्प्लेड, फाइन। 3 का कितना हो गया, 4। I4 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से 4 mod 7, 4 इटरेशन में क्या हुआ, I4 है, 4 mod 7 इक्वल्स टू 0 है, नो, 4 mod 3 इक्वल्स टू 0 है, नो, एल्स में जाएगा, एल्स में SOPLN 4, ठीक। देन 5, I का 5 हुआ, 5 mod 7 इक्वल्स टू 0, नो, 5 mod 3 इक्वल्स टू 0, नो, 5, 5। 6 हुआ, 6 mod 7 इक्वल्स टू 0 है, नो, 6 mod 3 इक्वल्स टू 0 है, 6 mod 3 इक्वल्स टू 0 है, यस, तो कंटिन्यू, नथिंग विल बी डिस्प्लेड, फाइन। 7 हो गया, 7 mod 7 इक्वल्स टू, इटरेशन 7, I mod 7 mod 7 इक्वल्स टू 0 हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ, तो ब्रेक मीन्स इट विल टेक द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन आउट फ्रॉम द लूप, फाइन। लूप से कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन को बाहर ले आएगा, तो नथिंग विल बी डिस्प्लेड एंड द लूप विल स्टॉप वर्किंग, फाइन। सो हाउ मेनी टाइम्स लूप विल रन, 7 टाइम्स, 7 इटरेशन है, 7 times, and the output is 1 2 4 5, fine. This is the output only, 1 2 4 5. I hope you have understood this, fine. Only the thing is, break will take you out and continue will take you to the next iteration. Now let's see one more, and this is the last one. For int I equals to 1, I less than equals to 10, I plus plus, if I greater than 4 and I less than 8, continue. If this condition is true, then continue, SOPLN I, fine. So this is the question. Now you can see, if condition is true, continue, fine, no braces are given. So if one statement is there after if, so braces are not mandatory, fine, that's why it is without braces, but only the continue will be condition dependent, fine. So if the condition is true, then continue. I hope it is clear. Now see, first we will write the iteration I and output. Same way, first iteration I is initially 1, so I is initially 1, condition will be checked, condition is true. Now 1 greater than 4 and less than 8, no, so condition will be false, so continue पर नहीं जाएगा, continue को skip करेगा, तो कहाँ जाएगा, SOPLN I, SOPLN I will display 1, fine. Now iteration is 2, fine.
इनिशियली आई वॉज 1, अभी कितना हुआ 2. अगेन द कंडीशन विल बी चेक्ड. 2 greater than 4 and less than 8, नो. कंटिन्यू नहीं हुआ. SOPLNI 2. इटरेशन 3, I3. Output, again condition will be false, so it will display 3. Iteration 4, I4. Again I greater than 4, not equal to. Fine. So again condition will be false, so continue नहीं हुआ. Then what will be displayed? 4. Now 5. Now see the condition. If I greater than 5 and less than 8, yes, 5 lies between 4 and 8. So when I is 5, तो condition will be true. Continue. So continue ने क्या किया? It will take you to the next iteration. तो 5 nothing will be displayed. I6 हो गया. Again the condition will be checked. 6 हुआ. Condition again true है. Nothing will be displayed. Continue इसको वापस ले गया. SOPLN पर नहीं गया. Continue ने क्या किया? यहीं से इसको वापस नेक्स्ट अपडेशन पे ले गया. इट विल नॉट कम टू द SOPLNI. ठीक है, इस यहाँ तक पहुँचा ही नहीं. कंटिन्यू ने एग्जीक्यूशन को वापस भेज दिया नेक्स्ट इटरेशन पे. देन इटरेशन 7, I7. अगेन द कंडीशन इज ट्रू. फिर से कंटिन्यू हो गया, वापस चला गया. इटरेशन 8 हुआ, I8 हुआ. नाउ कंडीशन विल नॉट बी मैच्ड, तो कंटिन्यू नहीं हुआ. ठीक है. सो इटरेशन आपका कंटिन्यू, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, कंटिन्यू नहीं हुआ, डिस्प्ले हुआ. अगेन द 9 में क्या हुआ? अगेन कंडीशन विल नॉट बी मैच्ड, तो सीधा डिस्प्ले हो जाएगा. व्हेन द इटरेशन इज 9, I is 9, आउटपुट विल बी 9. देयर इज नो स्पेस. एंड द लास्ट वन इज इटरेशन 10, I is 10 and the output is 10. Fine. So how many times the loop will run? 10 times. If it is asked, then only you show. Otherwise only the output, I and output you can make. Iteration not mandatory to write. Fine. And what is the output? Output is 1 2 3 4 8 9 10. 5 6 7 will not be displayed. 5 6 7. I hope it is clear. Fine. So by this way you should go the step by step and you can write any output. Fine. So that's it in this video. Thanks for watching.